Hello everyone, welcome back to IELTS Adda. Here's your team teacher Nishtha Singh. I hope all of you are doing really, really great. So first, let's join everybody so that we can start our today's session. Hi Gagan, Gagan is here. Hi, good evening Gagan, how are you? I hope you are doing really great. Like since 3 o'clock, right? Okay, so please everybody join quickly. So today what we are going to discuss, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, as you are aware, आज हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो आज हम लोग ऑडियो प्रैक्टिस के क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली आंसर्स, राइट. लेट मी जस्ट राइट इट हियर एज वेल. ओह, रेड के ऊपर रेड नहीं चलेगा, ब्लैक ले लेते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आंसर्स, राइट. मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं सो दैट यू कैन सी. सो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर्स. ओके गगन, आई नीड सम हेल्प फ्रॉम यू. आई एम गोइंग टू प्ले द ऑडियो, ठीक है. टुडे आई हैव एम्बेडेड द ऑडियो लाइक इन अनदर टैब. अब नाउ आई एम गोइंग टू प्ले इट फ्रॉम द सिस्टम. मुझे प्लीज ये बताना कि इज इट क्लियरली ऑडिबल, येस और नो. ओके, just do tell me that because I need somebody to at least listen to it and tell me कि हाँ it is clearly audible or not. लास्ट के 6 क्वेश्चन रह गए हैं, कोई बात नहीं. गुड इवनिंग. Hello, I'm new in the area and I'd like to join the library, please. No problem. This be just an application form. Here we are. Now, all we have to do is fill this in and then I'll get you to sign it and you'll be a member. Great. Okay, was it clear? You're always there for it. Thank you so much. तो क्लियर थी साउंड थोड़ी, लाइक फ्रॉम येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे व्हेन वी वर डूइंग द टेस्ट, उससे क्लियरिटी थी या फिर सेम, इट वाज द सेम थिंग? आज अगर आधा डिस्कस करोगे, नहीं बेटा आज मैं पूरा डिस्कस करने का सोच रही हूँ क्योंकि इजी था. दैट ऑडियो वाज लाइक होल टेस्ट वाज इजी, राइट. तो जल्दी जल्दी से यू कैन यू वुड हैव डन इट. सो कोई बात नहीं. I could left the class. नहीं, you have to be there. Be present in the whole class, okay? तो चलो, अच्छा मुझे ऑडियो का बताओ, was it clear? Yes or no? Please do tell me. बिल्कुल. Please do tell me about the audio. Is it clear? Yes or no? ऑडियो का बता दो, आपस में कॉन्वर्सेशन बाद में कर लेना प्लीज, बिकॉज अदरवाइज आई विल प्ले इट लाइक द वे आई डिड और जनरली डू, और इसी में चलेंगे तो ठीक है. मेरी तो ठीक है. द ऑडियो विच आई वाज प्लेइंग टेस्ट वाले का, लिसनिंग टेस्ट का ऑडियो क्लियर आ रहा था अभी या नहीं आ रहा था? इट वाज अगेन द सेम वन. ठीक ठाक है, अच्छा. तो चलो, इट्स ओके. हाय डीजे, you were not there at the 3 p.m. class. May I know why? I'm planning DJ for you to go for a speaking test आज के लिए. वीडियो में continuous sound आ रहा है, that was quite annoying. Still you are getting continuous sound. Still when I'm speaking you are getting the buzzing sound. मेरे को ना एक बार साउंड का इशू जो भी है ना प्लीज बता दो, सो दैट आई कैन क्लियर इट अप इन द इनिशियल 10 minutes. मैं नहीं चाहती कि वो इट विल एक्सटेंड, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट द लिसनिंग पार्ट टुडे. आंसर्स जल्दी से कंप्लीट करके आई जस्ट हैव टू शो इट टू यू कि हाँ क्या है क्या नहीं. प्लीज डू टेल मी कि इज देयर अ बजिंग साउंड और कुछ ऐसा साउंड है वो बता दो मुझे, ठीक है. And I'm going to play it on as usual, जैसे चलाते हैं वैसे चला देंगे, because I know it was easy. I know थोड़ा सा first part में it was there some disturbance because it was a telephonic conversation. Last वाले speaking video में let's play once again. हाँ कल नहीं थी, I was not well, I'm not keeping up with the weather. तो थोड़ा सा हो रहा है मेरे साथ में.
But today, like from now onwards, I'll be keeping it up like regularly. And today as well, I'm planning to take your speaking test. Okay, so I'll tell you the timings. Okay, so we'll see ki how well you are doing, how well versed you are with your speaking part. तो chalo, let's try to listen to the and let's try to answer it. DJ, you haven't sent me the answers of the listening test, so today we are going to discuss. ठीक है? कभी कभी तो छुट्टी मिलती है लिसनिंग वीडियो में. ओके, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हो जाता है ना, एक बार होना चाहिए ऐसा. मेरे साथ में तो दिक्कत हो गई थी, इसलिए मेरे को करनी पड़ी. तो चलो ठीक है, फिर पुराने पे असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं होते. मुझे तो भाई किसी ने भेजे ही नहीं है, राइटिंग का भी नहीं आया अभी तक. मेरे पास ना डीजे के रिस्पॉन्सेज आए, ना मेरे पास यश का आया. मुझे गौरव ने भेजा था, वो भी आधा अधूरा. ही वॉज नॉट, वो भी बहुत कंप्लीट नहीं था. तो चलो, आई एम गोइंग टू प्ले दी ऑडियो. मुझे आंसर्स बताते जाओ फ्रॉम फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू दी आंसर्स एज वेल. डीजे, यू ऑल्सो ट्राई. आंसर्स चाहिए बेटा मुझे फ्रॉम ईच वन ऑफ यू. ठीक है. I'm really sorry for that बेटा. कभी भी ऐसा हुआ करे ना, do mail me. ठीक है, I'll let you know over the mail as well. कभी भी, because मेरे को इतना मतलब I was not well कि I was not able to mail you as well. Otherwise I would have. मैं कर देती, but I wasn't that much well. So इसीलिए थोड़ा सा इशू हो गया. You could have mailed me. ठीक है, मेल कर दिया करो मुझे अगर कोई भी ऐसा इशू होता है तो I'll let you know. चलो ठीक है. Now I'm going to play the audio, listen to it and then tell me the answers. ठीक है, quickly every one of you. 1 से लेके 5 तक के आंसर्स बताओ पहले, और उसके बाद में मुझे वो बताना. ठीक है, जिसने गगन ने तो कर रखे हैं, सो इट्स गुड. गगन, यू कैन ऑल्सो आंसर अगेन एंड रेस्ट ऑफ यू कैन आंसर मी हियर. ठीक है, क्विकली विल डू इट. जल्दी जल्दी खत्म करते हैं. Hello, I'm new in the area and I'd like to join the library, please. No problem. Let me get an application form. Here we are. Now, all we have to do is fill this in and then I'll get you to sign it and you'll be a member. Great. Now then, what's your full name? Peter Adrian Camden. How do you spell Camden? C-A-M-D-E-N. C-A-M-D-E-n. Okay, so what is the answer? First question going to be, still that tick tick sound is coming. I know this is some issue with the mic as well. आता ही है, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एवरीबडी क्विकली. क्या सुनाई दिया? व्हाट वाज हिज फुल नेम? पीटर एड्रियन. उसने क्या बोला? कैम्डन. रिमेंबर? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. डीजे, व्हाट डू यू थिंक? आंसर क्या होगा बेटा? करेक्टली मुझे बताओ प्लीज. सॉरी, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, इसमें बहुत बच्चों की क्या गलती होती है, दैट दे मिस हियर एम विद एन. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कैम्डन को ना कैंडन सुन लेते हैं. बहुत बार ऐसा होता है. आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट. मेरे बहुत सारे ऐसे प्रीवियस स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत बार ऐसे ऑडियो में क्या करेंगे, वो कैम्डन को, मतलब एम और एन का बहुत मिस्टेक होता है. सो प्लीज डू हियर इट क्लियरली. आई नो ओवर हियर देयर इज सम डिस्टर्बेंस और थोड़ी बहुत नॉइजेस हैं, बट when you will take out the test, actually जब होता है, so they will give you some time. कोई भी ऐसा issue आता है, so they will change your headsets and all. ठीक है, so that is why. तो चलो, now let's move to next question. That's right. Right. And what's your address? Flat 5, 53 Green Street, Finsbury. Okay, got that. That's near here. So address वो बताते हैं, फ्लैट 553 ग्रीन स्ट्रीट, फिंसबरी, राइट? You guessed it, L2. I know LMN इसमें थोड़ा बहुत होता है. These are the rhyming alphabets, so उसमें issues आ जाते हैं. So that is why we have to hear very clearly and properly as well, right? So second वाले का क्या आंसर हो जाएगा? ग्रीन, राइट? मुझे गगन ने ऑलरेडी आंसर दे दिया था. इश हैज ऑल्सो आंसर. दैट्स ग्रेट, एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट्स मूव टू द थर्ड वन. Yes, just 5 minutes walk. What's the postcode? 7424. I mean, sorry, 7434. देखो,
रिमेंबर, सबसे पहले उसने क्या बोला 7424 एंड देन ही करेक्टेड हिमसेल्फ, ओ सॉरी 7434 इट इज राइट. सो दिस इज दी व्हाट, याद है डिस्ट्रैक्टर्स आए थे जब हम जल्दी जल्दी में जब होते हैं, अगर मान लो मुझे पहले सुनना होता मैं 7424 जल्दी से लिख लेती राइट. ये चीज क्या होती है डिस्ट्रैक्टर, सो वी हैव टू अवॉइड देम. ये चीज क्लियर है. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 7434 राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, can you tell me your date of birth? 8th of July 1976. This was easy. What's your telephone number? Fine. Yes, what does he exactly said? Oh, sorry. Yes, he said, oh, sorry. And then he corrected himself that it is 7434, not 7424, right? No, oh, sorry. चलो, next पे आते हैं. It's 06634 982 746. अब देखो. अब देखो, उसने जब फर्स्ट टाइम में व्हेन ही सेड द नंबर इट वाज रियली लॉन्ग, सो आई नो कि एट द फर्स्ट गो इट वाज नॉट इजी फॉर यू टू नोट इट डाउन, या फिर बहुत सारे वैसे बच्चे होते हैं जो नोट डाउन कर भी लेते हैं, बट समटाइम्स इट इज नॉट एडवाइजेबल टू नोट इट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम. वो दूसरी बार जब बोलता है, ठीक है, एक बार लिख लिया आप लोगों ने, दैट्स वेल एंड गुड, बट रीचेक इट. अगर जब ऑडियो में दोबारा वो बोला जा रहा है तो उसको रीचेक जरूर करना, ठीक है. दैट इज एडवाइजेबल. वाई, क्यों करना होता है? ताकि हमारा कोई भी जो छोटी मोटी लाइक विद द सिलिएस्ट मिस्टेक अगर हम कर दें विद सम नंबर्स और अल्फाबेट्स और कुछ भी, तो ताकि वो चीजें रिपीट ना हो. गॉट इट. तो चलो, दैट वाज द एंड. वो आगे नॉर्मल से एड्रेस प्रूफ एंड ऑल ही विल बी आस्किंग और शी विल बी आस्किंग, सो विल क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है, वो वहां पे क्या पूछती है, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डज ही लाइक. सो क्या बताएगा, चलो देखते हैं इसमें. Good ish, आपके all 5 are correct. That's really great. 5 out of 5. DJ, how many of you have gotten correctly? Please मुझे बताओ एक बार. You also tell DJ कि कितना correct हुआ है, ठीक है, by yourself. Now, let's move to the book part. Now listen carefully and answer questions 6 to 10. Could I ask you a few questions? The council that runs the library is running a survey to find out what kind of books people prefer so that they can direct their buying. Yeah, no problem. Okay, so what type of books do you like? Well, I'm very keen on mysteries. You know, when a detective is trying to find out. Historical novels interest me too. My sister loves them, but they bore me. Books on animals too. I get them out sometimes. Not science fiction either. तो चलो, now it was very very like easily understandable कि उसे कौन कौन सी बुक्स पसंद थी. उसने सबसे पहले बोला मिस्ट्री, इट रियली यू नो गेट्स मी, सो सबसे पहला मिस्ट्री हो गया. फिर सेकेंडली वो बोलता है हिस्टोरिकल नॉवेल्स, उसने बता दिया. थर्ड में ही टॉक्स अबाउट साइंस फिक्शन के लिए बताता है. वो पहले वो बताता है किसके लिए, रोमांटिक नॉवेल्स के लिए. वो कहता है माई सिस्टर लाइक्स देम. रिमेंबर, उसने बोला कि मेरी बहन को पसंद है, बट इट बोर्स मी आउट, उसे वो बोर कर देते हैं. एंड साइंस फिक्शन के लिए ही सेड कि आई डोंट लाइक इट बिकॉज इट इज नॉट, मतलब उसे थोड़ा सा वो अनरियलिस्टिक या जो भी चीजें लगती हैं. एंड देन ही लाइक्स अ बुक ऑन एनिमल्स. तो 3 हमें आंसर करने थे बिकॉज देयर वर ओनली 3. सो हमारा क्या क्या हो गया, एफ हो गया, डी हो गया एंड ए हो गया. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी एफ डी ए इन एनी ऑर्डर. आप चाहे ए डी एफ लिख दो, एफ डी ए डी एफ लिख दो, इट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू. क्लियर. तो चलो, ऑल ऑफ योर्स आर करेक्ट, गगन के भी एंड इश के भी. तो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बिकॉज मेरे पास दोनों ने आंसर दे दिए हैं. ओके, सो इट वाज जस्ट एक्स्ट्रा पार्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. Good. Oh, do you charge anything? यस आई नो देयर आर टू मेनी डिस्ट्रैक्टर्स ओवर देयर. थोड़े से थे उस वाले बुक्स वाले में, बट ठीक है, यू ऑल आर अवेयर ना कि हाउ टू कम अप विद दोज, हाउ टू ओवरकम द डिस्ट्रैक्टर्स. सो यू गाइज आर यू नो प्रिटी वेल एज्ड इन इट. सो आप लोगों को इतना कोई इशू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो चलो, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. How much is that? Well, we went to Keen on mysteries. You know, when a detective is trying to find out who did the murder. Historical novel. Romance.
free unless you want to rent out some of our videos or Okay, yes, just listen to the person, that's correctly. Now वो बोलता है how much does it cost to join the library? वो कहती है it is free of cost. Remember, aged means experience. Yes, exactly. So वो क्या कहता है free of cost. तो यहाँ पे you can write free. ठीक है, not more than 3 words. So either you can use free of cost, पूरा का पूरा लिख देना, free लिख देना, no cost, zero लिख दो. Everything is going to be correct over here. ठीक है, not more than 3 number of words है तो I can use free of cost. कोई गलत नहीं करेगा इससे. ठीक है, I can use 1 word, 2 word और 3 words. 3 से ज्यादा कर दोगे गलत हो जाएगा, 3 से कम कर सकते हो. ठीक है, क्यों no more than 3 लिखा हुआ है. Instructions, that is why instructions are very very important for us, right? तो चलो next question. DVD. How much is that? Well, we rent videos out for $4 each and DVDs are $6. तो चलो उसने क्या बताया, उसने बताया videos $4 each and DVDs are $6 each, right? So for over here you can write $6 simply. $6 का चाहे ऐसे साइन बना दो या $6 लिख दो या फिर 6 लिख के $6 मतलब 6 and then dollars लिख दो. It's completely dependent on you, right? So question number 9 and question number 10 again absolutely correct for both of you. DJ is not telling me any of the answers, so I cannot say कि उसके क्या गलत है क्या नहीं. But I'm saying please do send me your answers बेटा जो आप लोगों ने लिखे हैं. At least I'll be aware ना that how well you have done. आपको खुद भी पता लगेगा. 5 out of 5, that's great, good job. So section 1, 10 out of 10, both of you, that's really great. चलो ठीक है, let's move to section number 2. Now this was the section number 2, remember? तो चलो how to handle the MCQs and what are the tips of that. I'm getting so confused. Okay, so now we are going to do the MCQs only, so you can at least learn from here and see that what are the mistakes that you have done. Answers करे हैं अपने, so please do tell me कि what are the answers that you have done for question number 11 to 16. I guess हमने 11 से लेकर 16 तक MCQs हैं इसमें ना स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद और भी हैं. So पहले एक बार देख लेते हैं, right? So गागन के मेरे पास already answers आ चुके हैं. Ish, you also try to send me the answers बेटा, ठीक है? Now I'm going to play the audio and then we'll see the answers. Hi, Linda. Can you spare a few minutes? Hello, Matthew. No problem. I just wanted to talk to you about temporary work placements. I never really thought there was a good reason for doing one. I've got some savings, so I don't really need the money at the moment. देखो उसने बोला I have got some savings so I don't really need the money at the moment. So that means B option आपका सीधा सीधा कट गया. ठीक है बेटा, देखो how we are going to cope up with the MCQs part. Question पढ़ो, MCQs के जो options हैं वो देखो. ठीक है, that's it. जब अपने आप conversation सुनोगे ना, you will have a better understanding कि question में जो पूछा गया है क्या वो उसमें बता रही है या बता रहा है, क्या वो बात की जा रही है उसमें. अगर की जा रही है so again the correct option is going to be your correct answer. बट अगर उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है या उसको निगेट कर दिया है या फिर उसको क्या कर रहा है, वो उसको निगेशन में लेके जा रहा है, नेगेटिवली उसके बारे में बोल रहा है, सो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू बी योर आंसर, राइट? सो दैट इज हाउ वी चूज आवर आंसर्स. ठीक है, सो देखो यहाँ पे उसने सबसे पहले बोल दिया कि उसके पास में सेविंग्स हैं, सो ही डजंट नीड एनी मनी. सो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सीधा सीधा कट गया, राइट? अब बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं और सुन लेते हैं कि वो बात क्या बोल रहा है. But I've had an email from the university about a vacancy that looks quite interesting. You did a placement last year, didn't you? अब देखो उसने अभी अभी बताया कि he got an email from a university about their vacant seat or anything. So उसने क्या बोला, ये उसने साफ साफ क्लियर कर दिया कि मुझे एक मेल आया और उस मेल में क्या कहा गया था कि देयर इज एन वेकेंट पोजीशन फॉर समथिंग, और जो अगर आप इंटरेस्टिंग वैकेंसी है देन यू कैन ज्वाइन, राइट? लिसन लाइक अ मॉन्क, एग्जैक्टली, सेंसेस खोल के, बिल्कुल आंख बंद कर लो, मतलब आंख भी खोल के रखना क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, बट पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ इस ऑडियो पे लगाना है. जो भी आपको ऑडियो मिलता है, वट एवर यू आर लिसनिंग टू ना, लिसन टू देम केयरफुली. अगर मान लो आधा ध्यान रखोगे और आधा ध्यान कहीं और रखोगे तो यू वोंट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड. और वही चीज़ तो है, कोई गाना भी सुनते हो यार, मैं नॉर्मल सी बात बोल रही हूँ, इफ यू आर लिसनिंग टू अ सॉन्ग ओनली ना,
अगर नॉर्मल मी, इफ यू आर लिसनिंग टू एमिनेम लेट्स से, हाउ यू विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड हिज लिरिक्स एट ऑल इफ यू डोंट पे अटेंशन? कभी नहीं कर पाओगे. व्हाई? वो होते ही इतने फास्ट हैं, उसके बाद में ऑब्वियसली हिज एक्सेंट इज देयर एंड द वर्ड्स ही यूजेस इज देयर, सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग और सिनारियोज कि इसकी वजह से नहीं समझ में आ पाएगा. इसीलिए पूरा तन मन धन लगा के सुनना होता है. सो यही चीज हमें यहाँ भी मतलब क्या करना है, अप्लाई करना है. तो चलो, फर्स्ट का मतलब 11 क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दैट इज ए. सो दैट इज डन. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, और दैट इज 12. नाउ लिसन टू, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, देन यू विल लिसन टू द ऑडियो. ठीक है, ऑडियो साइमल्टेनियसली ऑडियो चलेगी टेस्ट में, बट यू विल हैव टाइम फ्रॉम लुकिंग फॉर द क्वेश्चंस. स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स मिलते हैं ऐसी चीज के लिए. मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चंस अलग अलग पेज पे डाल रखे हैं, वहां पे यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस ऑन अ सिंगल पेज. सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रीड एट वंस फर्स्ट थिंग, और फिर आराम से ऑडियो सुनो और क्वेश्चंस मार्क करते जाओ. दैट इज हाउ यू विल डू इट राइट. डीजे क्लियर है बेटा? हाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द एमसीक्यूज पार्ट, या फिर अभी भी कोई डाउट है? प्लीज डू लेट मी नो. और देखो, यू विल गेट मोर क्लैरिटी हाउ, बाय डूइंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस. ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बता दिया और आप कह दोगे कि नहीं मैम मैं तो सर्वगुण संपन्न हो गया, मुझे सब क्लियर हो गया. आई नो इट इज नॉट इजी. कैसे होगा इजी? दैट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. क्वेश्चंस लगाओ ना, मैं मना तो नहीं करी. ऑडियो टेस्ट पढ़े हुए हैं यार, मैंने 2-3 तो ले ही रखे हैं ना. सो यू कैन गिव दोज टेस्ट, यू कैन आस्क मी फॉर मोर. सो आई विल गिव यू दैट एज वेल. सो आराम से करो, कोई ऐसे वो नहीं है. ठीक है, सो नाउ लेट्स लिसन टू द ऑडियो एंड लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 12. I did, yes. In my case, I wanted to find out if I was making the right career choice before I began applying for permanent jobs. I thought I wanted to work in car manufacturing, but I wasn't sure, so I applied to Toyota. What was the application process like? Lengthy. There were a lot of different parts to it. The dullest one was a psychometric test. You know, देखो, she said the dullest one, most boring one. dullest क्या होता है? boring. So she said the dullest one was the psychometric test. But question में क्या पूछा है? What she find the most interesting. So this is not the answer, right? So ये तो हो गया dullest one. So I won't be choosing this one. Now let's move to other two options which are given as group activity and individual task. So देख लेते हैं दोनों में से क्या उस चीज को सबसे अच्छा लगा. when you have to answer loads of questions about yourself. And you're trying to guess what's the best thing to say. Yes. Then there was an activity that we did in groups, which I found really fascinating. Engineers are renowned for being a Now she did a group activity. So yeah, I know it was inaudible. I can completely understand your issue, beta. Because over there the mic problem and a lot of things are there. ठीक है, so obviously और ये first वाला जो audio था ना, इसमें थोड़ा सा issue था भी. So it was there, but from now onwards I'll try to embed the audio in the PPT itself so that वो चलता रहे तो थोड़ा सा clarity हो. ठीक है, तो चलो. I know. तो चलो. Yes, so correct answer is going to be B. उसने क्या बोला कि जो group activity थी, I have enjoyed it the most, right? So correct answer is B again. So Ishka and Gagan both have answered it correctly yet. Next question, question number 13. Let's listen to the audio. bit unsociable. We made a great team. And we had an individual task too. We had to sort through various business documents and prioritize them. It was just like what you have to do as a student, really, just with different content. What exactly were you doing on the placement? I was helping to design some diagnostic software to identify any waste in the car assembly process. Do you mean waste of materials? No, time. Anything that can Now, उसने बोला क्या तुम वेस्ट मटेरियल को मतलब प्रोसेस करने में या किसी भी चीज में कर रहे थे? शी सेड नो, शी वाजंट डूइंग इट. सो वो कर क्या रही थी? शी वाज स्पीडिंग अप द कार असेंबली. शी विल से दैट. लेट्स लिसन टू इट. speed the process up helps to cut costs. How did the work placement compare to being a student? नाउ क्लियर है ये चीज? 13 का ये हो जाएगा. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट है. Gagan has already answered that it is A, right? So correct answer is going to be A. देखो सीधा सीधा सुनो ना, जो चीजें कट रही हैं वो काट दो. Embedding can take some extra 5 minutes to a slide, but they surely mitigate the audio problem. I know. It is going to. That's why I'm going to from now onwards. Now I'll be doing the same only because I don't want to hamper the quality of it, right? थोड़ा देखो कभी कभार क्या होता है, ऑडियो में इशू होता है because the first part in the audio there was a telephonic conversation between two people.
So it was distorted from the source as well. वो source से ही distorted थी. But you know, rest of the audios are clearly like clear, but they are not. If you are not getting it clear, so this is not what I want, right? Yes, exactly. So chalo, now let's move to the next question. Let's read the question and let's answer this. Is it hard work? Yes, it was. I had full-time work before. I've done various unskilled jobs during देखो उसने बोला I had a full time work before, but question में बोला गया है she wasn't used to full time work. So that means this is going to be cut down. This is not an option that we should go for. क्वेश्चन में बस ये पूछा था why did Linda find her workplace tiring? क्या वो उसको अपना काम क्यों टायरिंग लगता था? रीजन क्या था? university holidays, and some of those involve long hours. So I thought I'd find it easy. I was wrong, though. I think when you're on placement, you're always trying to prove yourself. So you push yourself hard to succeed? Yes. But I got a lot of support from... So, on which she agreed, उसने किस बात पे agree करा that she had to prove herself worth. उसको अपनी worth prove करने में वो सबसे ज़्यादा tiring था. So she said it, she accepted it. So correct answer क्या हो जाएगा? C is going to be the correct answer. Yes or no? Who all are agreeing with me? DJ, I'm not getting any answers from you, beta. Why is that? Like you have attempted the answers, yes or no? Please do tell me, so that I'll be aware. Na, at least you are understanding what I'm telling you. Please try to understand. ठीक है? So correct answer क्या हो जाएगा? C हो जाएगा. Let's move to the next question. 15. Let's listen to it. काम करने से डर नहीं लगता, जजमेंट से लगता है किसको? चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं. my employers. They were always helpful. And then, at the end of the placement, I was given formal feedback. Do you mean on your engineering ability? Well, no. I didn't really need that because we had team meetings every other day. And so I had the chance to discuss technical issues and ask about anything that wasn't clear. The evaluation was about general workplace things, like organizational ability, initiative, that sort of thing. देखो अगर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज या स्किल्स नहीं होता सो इट कुड हैव बीन व्हाट okay so now today you are listening right so you are getting you are understanding questions के आंसर्स कैसे आ रहे हैं चीजें हैं चलो दैट्स ग्रेट गुड गो अहेड कोई बात नहीं सुनो आराम से आई एम नॉट सेइंग कि अभी आंसर का रिप्लाई मतलब अभी रिप्लाई करो बट डू टेक आउट द टेस्ट और ट्राई टू आंसर इट बाय योरसेल्फ ठीक है 15 का क्या आंसर हो जाएगा बेटा 15 का बी हो जाएगा करेक्टली टीम वर्क की उसने कहीं बात ही नहीं करी शी सेड सबसे पहले इंजीनियरिंग एबिलिटी आया उसने बोला दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर सो उसने क्रॉस कर दिया फिर सेकंड में उसने बोला कि टीम वर्क था एंड क्या क्या चीजें उसने सीखी सो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज वाज देयर तो उसने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कर दिया ठीक है तो चलो लेट्स मूव सी टुडे आई एम प्लेइंग इट बिट बाय बिट ना इसीलिए फॉर द कॉन्टिन्यूएशन में it is okay bit by bit mein you will hear something you will answer the question then you will hear so it is more clearly you know understandable तो चलो 15 का बी हो जाएगा इसने मुझे 16 का भी बता दिया let's see and let's read the question and try to answer it question क्या कह रहा है what was the main benefit of Linda's work placement क्या benefit था I get the impression you think you benefited from the placement. Well, the best thing is that they've offered me a job for next year, बस depending on my exam result. exactly सबसे पहली चीज उसने बोल दी that it is going to be what it is going to be a job offer for her अब वो उससे पूछता है permanent one obviously so उसको क्या मिल गया job offer मिल गया so that was the first sentence right पहले ही sentence में से clarity मिल गई कि that what is going to be there right so question number 1 से 16 यहाँ पे हो गए and next ones are question number 17 to 20 so that was what 8 उसमें लास्ट में now they will you know talk about something else कि हाँ ठीक है क्या होता है so now let's move to question number 17 to question number 20 I hope it is clear again जितने भी from 11 to 16 you have done absolutely correct both of you Ish and Gagan you have done a great job now let's move to question number 17 to 20 I'm about to make a start on the engineering materials module and I've got a book list here. Can you have a quick look and tell me what you would recommend? That's if you can remember. Let's see. I do remember some of them,
Yes, this one. The Science of Materials. I found the subject quite hard generally, but this book is very accessible, so it suited me. It doesn't cover everything, though. What about this one then? तो चलो क्या है 17 का क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से बताओ. इट वाज बी. ओके दैट्स ग्रेट. इश व्हाट डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी. देखो क्वेश्चन में एक बार फिर से चाहे सुन लेना चाहे समझ लेना. इट वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इट इज इजीली एक्सेसिबल. एक्सेसिबल मतलब मेरे लिए बहुत समझना और उसको पढ़ना क्या था, आसान था. सो ऑब्वियसली 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. सीधा सीधा दिखा मुझे, राइट, कि इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड. सो 17 का बी हो गया. येस एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ सेकंड बुक दे आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल्स इंजीनियरिंग, राइट. सो मटेरियल्स इंजीनियरिंग को एक बार देख लेते हैं. Materials engineering. Oh, yes. I do remember that. But it's a bit out of date now, isn't it? Unless it's a new edition. I don't think so. But what I liked about it were the pictures. They really helped to understand the descriptions. So pictures were there, so to help you understand the description. Picture से related यहाँ पे कौन सा option है, illustrations I can see, right? So that is why you should be aware with the synonyms as well. Synonyms की इसीलिए knowledge बहुत important है. Why? Because pictures shouldn't be given directly, so illustrations are there, so you have to pick it up. कि क्या हो जाएगा correctly, illustrations हो जाएगा. So correct answer over here is going to be 18th A हो जाएगा. Clear? Yes ish, absolutely correct बेटा. Now let's move to the next one. Engineering basics. It's useful just from that point of view. Let's see. What else? Oh, yes. That one there. Engineering basics. I think out of all these, that's got the widest coverage. But I've looked at the contents page and it hardly mentions nanotechnology. Yes, you're right. Evolution of material. देखो हार्डेस्ट कवरेज उसने क्या बोला, मतलब उसमें सारी की सारी कवरेज है. दैट मीन्स इट इज कॉम्प्रिहेंसिव. कैसी है वो, कॉम्प्रिहेंसिव. सीधा सीधा क्लियर होना चाहिए दैट ऑब्वियसली इट इज कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो दैट मीन्स इट इज कॉम्प्रिहेंसिव. यस 19 हो जाएगा. तो चलो नाउ यू हैव कंप्लीटेड 3 questions like 3 books. Now last one is evolution of materials is there. So अब देख लेते हैं उसमें से क्या हो जाएगा. Does though. It's a recent publication, so it covers all the latest developments. It's a bit thin on the 1960s though, and that decade was quite important. Well, it sounds as if they all complement each other in some ways. I don't suppose you can lend me. चलो लास्ट वाले का पता लग गया. एवोल्यूशन ऑफ मटेरियल्स इट इज अप टू डेट. उसमें बहुत सारी पिछली चीजें भी कवर्ड हैं एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग कवर्ड, राइट. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ओवर हियर इज सी. क्लियर है? यस. So 17, 18, 19, 20 are going to be like B, A, D and C, right? Yes, B, A, D and C. You both have done it correctly. I hope DJ you are also getting it. So now let's move to yes wide coverage. So let's move to the next part, which is the third part. Again these ones. तो चलो let's try to answer these questions. ये भी बहुत easy था, remember? I guess काफ़ी के इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी, बट ऑलमोस्ट यू हैव गॉटन लाइक 20 आउट ऑफ 28 ना. तो चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Hi, Wolfgang. Oh, Mary, how are you? Oh, fine. How's it going? Have you just had a class? Yes, I just finished my listening class. It was a little bit difficult. Yeah. It's always difficult when you first arrive somewhere. I found it quite hard when I first arrived. But you know what really made a difference? Was going on these social activities that the college arranges for you. It gives you a chance to practice your English. And I've heard that the college is pretty good about organising those kinds of things. How do I find out about it? well, I've just picked up a schedule today. Let's have a look at it. Here it is. What is it? A schedule for this week or? Yeah, let's have. आई नो इस वाले में डिस्ट्रैक्शंस हैं. थर्ड पार्ट है तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शंस होंगे. एंड गगन इज सेइंग ये वाला समझ में नहीं आया. सो लेट्स रीहियर इट. एक बार दोबारा से सुन लेते हैं कि वेयर यू नो डिड रॉन्ग अ लिटिल बिट. चलो सुन लेते हैं एक बार. Look. Okay, yeah. Maybe we can do some things together, in fact. Yeah, that would be great. So, Let's see. What are they doing tonight? Monday night? well, they've got singing with guitar.
So I went to this last week. It's... Oh, really? Yes, it's quite good fun. Is it pretty good? Yeah. What do they do? Do they have a concert or...? It's... They teach you, modern and traditional songs. Well, I'm not much of a singer, but, Oh, come on. You should go. It's really good fun. Well, I suppose it'd be a good way to practice my English. Yeah, because you learn kind of British folk songs and things. It's really interesting. Oh, but look at that. That starts at 8. But I noticed at 9 o'clock. डिस्टॉर्शन हो रहा है अभी भी. गगन सिंह पहली बात तो ये ऐसा कभी बात नहीं हमारी कॉलेज में लाइक तुम क्या कर रही हो मैं ये कर रहा हूँ चलो कौन से देखे इट नेवर हैपेंड सो ऑब्वियसली इट नेवर हैपेंड इन इंडिया ना बट यू नो अब्रॉड इट हैपेंस अ लॉट वहाँ पे होता है स्टूडेंट एक्टिविटीज आर देयर इज इट स्टिल देयर एक बार ऑडियो फिर से प्ले करूँ लेट्स ट्राई टू री हियर इट ठीक है मुझे बताना ठीक है इफ इट इज स्टिल देयर There's a late night coach to Cambridge for film. देखो प्लेस उसने क्या बताया गिब्सन हॉल के लिए वो कह रहा है लेट नाइट कैम्ब्रिज उसने ही सेड इट फर्स्ट ठीक है तो उसको थोड़ा सा माइंड में रखना लेट्स हियर इट I think I'd want to go to try that. What time does this singing thing finish? Do you know? और 21st का पता लग गया फ्रांस जाएंगे वहां देखेंगे बिल्कुल देखना 21st का क्या हो जाएगा बेटा फिल्म पहले 8 बजे गिटार है एंड देन 9 बजे क्या बताया है उन्होंने फिल्म का है ठीक है गिब्सन हॉल के बाद क्या है आंसर बताओ मुझे जल्दी से 22 का आंसर व्हाट डू यू थिंक क्या हो जाएगा कहाँ का उसने प्लेस बताया व्हाट प्लेस डिड ही मेंशन गगन इश क्या हो जाएगा बेटा डू टेल मी द आंसर वाज 22nd he said it initially ठीक है yeah I know it's okay so 22nd का उसने अभी अभी क्या बोला था कि कैम्ब्रिज रिमेंबर CAMBRIDGE सुना था ये लेट नाइट के बाद क्या सुना वो नहीं सुनाई दिया कोई बात नहीं यू कैन री हियर इट ठीक है मैं दोबारा से प्ले कर दूंगी चलो लेट्स मूव टू द 23rd It kind of lasts about 2 hours. But I mean, we can always leave earlier. They don't mind. Oh, okay. So we can do both then? Yeah. So, Right. So that's at 9 o'clock. Yeah. what movie is it? Let me see. Oh, it's Rocky. Have you seen it? Rocky. Rocky? Oh, that's the one with Richard Dreyfuss, isn't it? Richard Dreyfuss? No, it's Sylvester Stallone. Oh, yes, I remember now. American movie. Yes, I haven't seen that. I want to see that. Good, let's go to that. All right. Oh, okay. Did you see on Tuesday that there's a tennis tournament? Tennis? What time's that? Well, that's at 4 o'clock in the afternoon. okay so tennis tournament is when 4 o'clock at the afternoon right so you can just simply write 4 p.m or 4 p.m normally लिख दो ठीक है not more than one word so you can just simply write 4 or this like that जैसे इश ने बताया है ठीक है movie is Rocky Sylvester Stallone ये तो पता ही लग गया होगा yes I know गगन वो उसके नीचे में मतलब like over here जैसे 8 p.m में ये था एंड यहाँ पे 21 करके ऐसे आना चाहिए था राइट दैट वाज लाइक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन पार्ट कि वो थोड़ा सा उस तरीके से हो गया ठीक है तो चलो नाउ उसने बता दिया नेक्स्ट उसका प्लेस वो बताने वाला है सो लेट्स हियर इट यू ऑल हैव आंसर्ड इट करेक्टली ठीक है दैट्स ग्रेट Where is it? Is it on campus or... No. It's at Wembley. So that's in London. Oh, so it's pretty far away then. What time will it be coming back? So the coach gets back at midnight. Oh, midnight. Well, tell you what, I think maybe I'd better cancel on that because I've got a class Wednesday morning, and I'm afraid at about 8:30. I'm afraid if I came back that late, I probably would. I'd be very tired in class, and actually, I'm more into football myself anyway. Not football. Well, did you see there's a football match on Wednesday? Oh yeah.
Well, who's playing? अब देखो, हाँ, आई नो फुटबॉल मैच आप पूरा कर रहे थे, बट नेम ऑफ द प्रोग्राम बेटा, इट कैन नॉट बी मैच ओनली, राइट? It cannot be match only, right, Gagan? So obviously it is going to be football here, not match. अगर कोई आपसे किसी प्रोग्राम का या किसी भी चीज का नेम पूछेगा, so you cannot say match ना. So आपको क्या पूरा का पूरा बताना पड़ेगा, क्योंकि मैच तो है ही, दैट इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, बट विच मैच इज देयर? फुटबॉल. मैंने फुटबॉल मैच ही लिखा है, नहीं, क्वेश्चन देखो, राइट वन वर्ड, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फुटबॉल. फुटबॉल इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम और इवेंट और जो भी चीज वो कर रहे हैं, सो नेम लिखना है, ठीक है? क्वेश्चन में अगर लिखा होता डोंट राइट मोर देन 2 वर्ड्स, देन यू कुड हैव यूज्ड फुटबॉल मैच ऑल टुगेदर, बट एक ही वर्ड यूज करना है, गुटबॉल नहीं है, फुटबॉल है, ठीक है? सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी फुटबॉल, ठीक है? तो चलो, दिस इज डन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30. राइट, ये था स्टैटफोर्ड ऑन एवॉन वाला ट्रिप. दोनों का गलत हो गया, हाँ बिल्कुल दोनों का गलत हो गया. सो लेट्स लिसन टू इट. Let's see. Oh, it's England and Brazil. Oh, I really want to see that. Would you like to go together? Yeah, sure. What time is it? Let me see. It says 15:30. So that would be 3:30. 3:30, huh? Now, I have a lecture right after lunch on Wednesday at 1:30. Uh-huh. What lecture's that? Oh, well, there's a journalist coming from the BBC. He's going to talk about his experiences as a foreign correspondent. Oh, that sounds interesting. Would you like to go? Yeah, what time do you say it was? Right after lunch, around 1:30. Oh, 1:30. I have a class then. What a Oh, yeah. Oh, that's too bad. Well, what time does your class finish? It's an hour long, so it finishes at 2:30. Oh, well, I shouldn't imagine. The lecture shouldn't go much later than that either. So after your class and after my lecture, we can get together to go to the football game. Okay, so we can meet... Let's see, maybe 3 o'clock. Or maybe 3:15. Yeah, I think 3:15 would be all right. तो चलो, now let's listen to the conversation with Statford on Avon वाला, ठीक है? Oh, and another thing I definitely want to do this weekend is to go and see. They're going to have a trip to Stratford on Avon. I think it's on. Let me see. What day is that? Friday. I think my roommate told me. Oh, Friday? Would you like to go to that? Yeah, but are you sure it's Friday? I thought that's what he said, but I might have been mistaken. Well, usually these things are on weekends. Right. Let's see here. Oh, you're right, yeah, Saturday morning, 8:30. Okay, so Saturday morning 8:30, right? So we are going to write morning here. Absolutely correct. जिसने भी 27 का morning करा है, both of you are correct. Let's listen to 28. Ah, right. Friday's the disco. Oh, disco. Yeah. So actually, I've arranged to go with some of my friends. So if you'd like to come along with us, Oh, that would be very nice, yeah. yeah, you can meet some more students. Oh, well, what time shall we go to that then? Well, it starts at what time? 8:30. But we don't want to go too early. So let's say 9 or 9:30. Let's say 9:30. Okay, yeah, we can meet there, but we'd better not stay too late because the Stratford thing is, pretty early in the morning. The bus will be leaving at 8:30. Oh, yeah, right. So we want to make sure we get up for that. Yeah. Say, by the way, this trip, since it's, quite a way away, do we have to pay anything extra for that, or is it free? Well, usually most of the trips are free. But, yeah, for these ones, which are quite a distance away, then we usually have to pay a little bit extra. Is it a lot, or...? No, it's usually about £25, something like that. Oh, well, do we have to tell them ahead of time that we're going to go? Yeah, usually you have to sign up a couple of days in advance. So, Oh, where do we do that?
Well, you do that at the Student Services Office. So you have to go and see one of the Social Activities officers. Oh, so just tell them that I want to go and to pay my money and then sign my name. Well, I think I'll go ahead and do that today. Actually, I've got some free time right now. Do you know where I go to do that? Yeah. It's the Student Services Office. एंड बस डिपार्चर टाइम इट हैज बीन सेड ऑलरेडी. कब बोला था उसने कि 8:30 बजे बस डिपार्ट होगी, रिमेंबर. मतलब टाइमिंग क्या थी कि वो बहुत पहले होती है, राइट. सो बस डिपार्चर टाइम क्या हो जाएगा, 8:30. बाद में भी बोलेगा ये. So I'm just going to write it down. Let's listen to it. And Ash is saying कि इमरिज नहीं सुनाई दिया था. You can rehear it बेटा because we don't have that much time. एक सेक्शन पूरा बचा हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा करवाना चाह रही हूँ, ठीक है. चलो, let's listen. It's just across the road from here. Oh, okay. Well, across the kind of... You mean the green building over there? Yeah. So it's on the second floor. Oh, okay. Well, tell you what, are you going to the Shakespeare thing? Yeah, sure. Would you like me to go ahead and sign you up as well? Oh, yes, yeah. That would be great. But, well, I haven't got any money on me at the moment. Oh, don't worry about the money, that's fine. You can pay me back this evening. I'll go and sign us now. And then when I meet you tonight at the singing, you can give me the money then. Oh, well, if you're sure, that would be great. No, it's no problem. Okay. Oh, is that the time? I'd better go. I've got a class. I'll be late. Okay, sorry. I'll see you later then. All right. See you tonight. तो चलो, that was all of it. Now let's move to question number 31 to 34, part 4. जल्दी से ये भी complete कर लेते हैं, ठीक है. चलो, अरे बिल्कुल आ जाएंगे स्पीकिंग में. Let's listen to the tea conversation now. During the 1930s, there was a popular song which had the title, Everything Stops for Tea. And to millions of British people, a restful cuppa is still an ideal way to relax for a few minutes from the rigours of the day. The English custom of drinking tea has its roots in the 17th and 18th centuries. When first imported to Britain, the exotic cha, or cha, as the Chinese tea was variously called, was considered a man's drink to be enjoyed with colleagues at London coffee shops. These were popular meeting places for many walks of life: politicians, lawyers, poets, actors, and writers. Many London clubs began in this manner, and the famous Lloyd's Insurance underwriters started out as Lloyd's Coffee House. In 1706, the first coffee house that offered tea was Tom's Coffee House, owned by Thomas Twining. He realized that he needed to introduce an added attraction to compete with the many other coffee houses in London, and tea was rare, exotic, and extremely expensive. With these credentials, tea became an exclusive drink and enabled Twining to open a tea shop under the sign of the Golden Lion in the Strand. साइन कौन सा था, गोल्डन लायन. By the 18th century, the ladies of the more affluent classes were going China mad, using tea as an excuse for displaying their extravagant purchases of Chinese porcelain and Dresden tea sets. A comprehensive tea tray would consist of a teapot and stand, teacups and saucers, sugar bowl, milk jug, and basin for discarded tea and tea leaves. Tea was still expensive and kept in locked tea caddies. Skilled craftsmen fashioned caddies of carved inlaid woods fitted with crisp. तो देखो, क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा, कहाँ पे रखा जाता था, सी लॉक्ड कैडीज के अंदर रखा जाता था, ठीक है. तो वेयर वाज टी केप्ट बाय मिस्ट्रेस ऑफ द हाउसेस, टी कैडीज में वो रखती थी, राइट. सबसे पहले वही बताया है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अब क्वेश्चन नंबर 35 से लेके 40 तक डायरेक्टली है, तो जल्दी जल्दी से करेंगे ये. इट वाज इजी वन, है ना. तो चलो, And precious metals to ensure the servants weren't tempted by this product. so now Ash was telling me कि उसने ये वाले पार्ट्स नहीं किए हैं, so it's okay. Now you can see, and if you want you can do it by yourself as well. Just listen to it because I'm not explaining anything. Listen to it and try to answer. Priceless commodity
The caddy was kept locked, and only the mistress of the house held the key and prepared tea when guests came to visit. No well-brought-up young Englishwoman could consider herself socially acceptable unless she knew how to brew a proper cup of tea. As the 18th century progressed, changes in commerce and working hours resulted in the main meal of the day being taken much later in the evening. The prospect of lasting from breakfast until evening did not appeal to the Duchess of Bedford, who is usually credited with being the first to alleviate late afternoon hunger pangs by introducing a small 4 o'clock meal served with tea. With time, the light wafer-thin toast or delicate white bread gave way to exotic fillings like tomato and egg, cucumber, chicken, or potted shrimps, followed by buttered scones, crumpets, or elegant pastries. The popularity of tea continued to spread, but it was not until 1839 that the first shipment of Assam Indian tea was landed in Britain. A healthy trade with India was soon established, and tea clippers, like the Cutty Sark, now a museum in a dry dock in Greenwich, were reaching the peak of their sailing days. In 1879, the first limited shipments of Ceylon tea began to arrive, and by 1880, this had been firmly established alongside Indian and China teas, giving the broad range of teas that are available today. There have been few changes in 3 centuries of tea trading. London is still the centre, and indeed Twinings still has a shop on the site of the original Tom's Coffee House at 216 The Strand. The name Twining has been linked with tea for over 280 years. Indeed, it was Richard Twining, in his capacity as chairman of the dealers of tea, who in 1784 persuaded Prime Minister William Pitt to reduce the high tax on tea, making the beverage more accessible to the general public. That is the end of part. यहाँ पे क्या था लास्ट में? William Pitt, remember? So now these are the correct answers. Now you can check. For sure it's 5 out of 6, 38 out of 40 if you are getting. ठीक है? चलो, if you are getting 38 out of 40, that means you are getting 8.5. ठीक है? 39 और 40 के लिए 9 ban हो जाएगा. So that was all for today, because we are already like 3 minutes I have taken for somebody else's. So now DJ, you can tell me that how much you have gotten, right? There is a thing in the last question. Which one? Gagan, 5 out of 6 कर लो, क्या ही दिखा. हाँ, अगर 5 out of 6 करोगे, again you'll be getting 8.5. So it's not 37, 38, 8.5. 35, 36, 8. इस तरीके से है, ठीक है? तो चलो. So that is all for today. We'll be meeting again tomorrow at again 3 p.m. and 5 p.m. And we'll be doing, let's say, पहले मुझे please writing के responses भेज दो so that I can check, ठीक है? At least उसमें तो मुझे पता लग जाए that how well you are doing. Both of the tasks together, 1 and 2. Okay, so bye bye, take care and have a great day.